हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 15 फरवरी 2023, दिन है वेडनेसडे और आज हम करने जा रहे हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ एनालिसिस। इस वीडियो के थ्रू कम्प्लीटली द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ एनालिसिस होगी। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे हमारे चैनल की ग्रोथ हो, हम अच्छे से अच्छे कॉन्टेंट आप तक पहुँचा सकें। फर्स्ट पेज पे बाइडन से ओवर 1 मिलियन यूएसए जॉब हिस्टोरिक से मैक्रोन। जो मोदी और मैक्रोन और बाइडन ने अनाउंस किया है कि 470 एयरबस बोइंग एयरप्लेन्स फॉर एयर इंडिया के लिए खरीदे जाएंगे। फॉर रॉयल्स इंजन सुनाक से स्काई इज लिमिट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडन और फ्रेंच के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने टूक किया है ट्यूसडे में इन अनाउंसिंग द एयर इंडिया ऑर्डर फॉर 17 एयरक्राफ्ट, 250 from the Airbus and 220 for Boeing, and underlying the agreement will depend our partnership further। तो स्क्रिप्टेड ये आर्टिकल दिए गए। Of the 470 aircraft of Tata Group owned Air India, 17 will be wide body plane for long haul flight। The airline signed the letter of intent with Airbus and Boeing, make it the largest ever pipeline of the new aircraft order by the India airline। Air India and the Airbus announced the deal at the virtual meeting by Modi and Macron, calling the landmark agreement। Modi said it is an important achievement for India। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे। दिल्ली गवर्नमेंट ने, जो दिल्ली के एलजी हैं, उन्होंने कहा है कि डीडीए को स्टॉप करने के लिए डेमोलेशन जो 5 days आफ्टर द बुलडोजर लैंडेड इन मेहरुली टू डिमोलिश द इलीगल होम एंड शॉप लिविंग डंजन ऑफ विदाउट रूफ ओवर द हेड। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना ने कहा है ऑर्डर टू दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को ईज करने के लिए डेमोलेशन ड्राइव टिल फर्दर ऑर्डर। तो उसके रिलेटेड आर्टिकल दिए गए। नेक्स्ट आर्टिकल पे सर्वे इन ऑफिस इन मुंबई एंड दिल्ली। जो वीक आफ्टर ए डॉक्यूमेंट्री टोकन ऑफ द बीबीसी ने गेट का है आईटी नॉक। जो एलिगेशन ऑफ नॉन कंप्लाइंग विद द ट्रांसफर प्राइजिंग रूल, बीबीसी से फुल्ली कोऑपरेटिंग। Acting against the what is alleged was non-compliance with the transfer pricing rule, revision of profit। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्यूसडे में कैरी आउट किया है प्रोमिसेस ऑफ द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की बीबीसी की दिल्ली और मुंबई गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा है द सर्वे वाज कंडक्ट इन व्यू ऑफ बीबीसी deliberating non-compliance with the transfer pricing ruling and vast revision of profit। They are एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू वेडनेसडे। तो सर्वे है कंडक्ट किया है अंडर द सेक्शन 133A ऑफ आईटी एक्ट। इट इज यूजुअली प्रोसीजर टू रिसर्च एंड सीज ऑपरेशन टेक प्लेस ओनली द बिजनेस प्रोमिसेस। आईटी ऑफिशियल ने कहा है लुक इनटू द बुक ऑफ द अकाउंट एंड बैंक अकाउंट एंड कैश। तो स्क्रिप्टेड आर्टिकल दिया। उसी के साथ ऑपोजिशन ने कहा है कि इंटिमिडेशन बीजेपी कॉल बीबीसी इरप्ट मेलिशियस अगेंस्ट द इंडिया। होल द अपोजिशन ऑन ट्यूजडे में क्रिटिसाइज किया कि इनकम टैक्स की जो डिपार्टमेंट की गई है सर्वे एट द बीबीसी के ऑफिस में इंटीमेशन ऑफ टैक्टिक्स रिफ्लेक्टिंग द सेंटर अनडेमोक्रेटिक एंड डिक्टेटोरियल एटीट्यूड। बीजेपी डिफेंड्स द एक्शन एंड एक्यूज द ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट। तो उसके रिलेटेड ये आर्टिकल दिए गए। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे। नेक्स्ट आर्टिकल जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे हम उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। Campaigning ad, Mota said narrative। All parties sought to be favored Dravan the parties race for the tribal vote more so the manifesto promises open and offer। जो त्रिपुरा में इलेक्शन होने वाली है, कल ही वहाँ पर जो कैंपनिंग थी ख़त्म हो चुकी है। अब 16 तारीख को इलेक्शन होगी। तो उसके रिलेटेड ये आर्टिकल दिया गया है। जो कैंपनिंग अब एंड हो चुकी है, मोहता सेट टू नैरेटिव। नेक्स्ट आर्टिकल्स पे मोदी गैलरी टू शोकेस पीएम पास्ट दैट सेव्ड हिज विजन। नरेंद्र मोदी की पर्सन विल बी फोकस ऑन द अपकमिंग गैलरी डेडिकेटेड टू कंट्री 15 प्राइम मिनिस्टर एट द पदरामोत्री संगमार्या इन न्यू दिल्ली। इट विल शोकेस द सम ऑफ द मोदी पर्सनल एक्सपीरियंस फॉर द चाइल्डहुड which have led to the foundation of key policy decision and several pet projects during the tenure as the prime minister। इंडियन एक्सप्रेस ने लर्न किया तो उसके रिलेटेड आर्टिकल दिए गए।
अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे। कानपुर में डेमोलिशन चल रही थी, फैमिली सेड ऑफिशियल सेट हाउस ऑन फायर एंड दे डिनाई। तो डे आफ्टर टू वुमेन एंड डॉटर डेथ टू हेल्ड एसडीएम एंड कॉप बुक फॉर मर्डर। एरोगेंस ऑफ द पावर, राहुल ने कहा अखिलेश लाम बीजेपी गवर्नमेंट इन यूपी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने और समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट ट्यूसडे में स्लैम किए बीजेपी ओवर द इंसिडेंट ऑफ व्हिच वर द 46 और वुमेन एंड हियर डॉटर allegedly immolated themselves to during anti-encroachment drive in कानपुर। तो उसके रिलेटेड ये आर्टिकल दिए गए। कर्नाटका बीजेपी एमएलए सोन गेट द 2 years जेल इन करप्शन केस। जो बीजेपी एमएलए हैं नेहरू ओलकर, हिज 2 sons and 6 associates आर द सेंटेंस टू द 2 years imprisonment ऑन चार्ज ऑफ करप्शन। तो उसके रिलेटेड ये छोटा सा आर्टिकल दिए गए। न्यू डाटा प्रोजेक्ट किया गया है, 4% इंक्रीज हुई है व्हीट प्रोडक्शन में दिस फिजिकल ईयर में। व्हीट प्रोडक्शन जो एस्टिमेट किया जा रहा था रीच करेगी 112.18 मिलियन टन्स ड्यूरिंग द 2022-23 व्हिच वाज द 4.12% हायर देन 107.74 million tons record during the 2021-2022 according to second advance estimated of production of major crops released by the Ministry of Agriculture और Farmer Welfare के द्वारा एस्टिमेट करा जाए। फिगर wheat production for the 2022-2023 is also higher the target 112 million for the during year। तो उसके रिलेटेड ये आर्टिकल दिए गए, आप इसे सेल्फ नॉलेज से पढ़ सकते हैं। Day after the murder near the court complex, Sobel held opposition raised heat on the DMK for the twin murders. Vacant Lok Sabha deputy speaker post, Congress slammed the government. Birla say it is a part of process. जो with the Supreme Court taking of the PLA on the non-election of deputy speaker in Lok Sabha apart from the several state assembly, कांग्रेस ने कहा कि it is the another example of government destroying the establishment of the practice and convention। तो उसके रिलेटेड आर्टिकल दिए गए। असम के जो एक्शन है चाइल्ड मैरिज के, हाई कोर्ट ने बेल दिया है 9 लोगों को। व्हाट इज जो पॉस्को ऑफेंस हियर, जो ऑब्जर्विंग कर रहा था चार्जेस अंडर द स्टैंडिंग प्रिवेंशन चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस पॉक्सो may not be justified। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ट्यूसडे में ग्रांट किया एंटीसिपेटरी बेल फॉर 4 सेपरेट केस ऑफ द चाइल्ड मैरिज। तो उसके रिलेटेड ये आर्टिकल दिए गए। एरो इंडिया 2023 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने कॉन्क्लेव किया है, इंडिया डज नॉट बिलीव इन कट एंड ड्राइड सॉल्यूशन फॉर कंट्रीज इन नीड। राजनाथ सिंह ने कहा है इंडिया डज नॉट बिलीव इन गिविंग द सेरेमोन्स और कट एंड ड्राई सॉल्यूशन टू कंट्री नीडलेस द असिस्टेड एंड द नेशन विद सुपीरियर मिलिट्री पावर और बेटर टेक्नोलॉजी पावर टू डू नॉट हैव द राइट टू डेडिकेट सोल्यूशन टू अदर। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ट्यूसडे में कहा है कि व्हाट लुक लाइक ए बिजली डीजा एंड चाइना। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे। मुंबई, ढाका, लंदन और न्यूयॉर्क इन लाइन टू थ्रेट फ्रॉम राइजिंग सी लेवल सेड WMO। जो इंडिया और चाइना, बांग्लादेश और नेदरलैंड्स फेस कर सकते हैं हाईएस्ट थ्रेट टू सी लेवल राइजिंग द ग्लोबली अकॉर्डिंग टू न्यू रिपोर्ट जो पब्लिश किया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। द रिपोर्ट ग्लोबल सी लेवल राइज एंड compliance state at the several big city in all countries threatened by the rise in sea level, this including the Shanghai, Dhaka, Bangkok, Jakarta, Mumbai, Maputo, Lagos and Cairo, London and Copenhagen, New York, लॉस एंजलिस, बोनस आयरिस एंड सेंटिगो। तो उसके रिलेटेड ये आर्टिकल दिया गया है। इट इज ए मेजर इकोनॉमी एंड सोशल ह्यूमैनिटेरियन चैलेंजेस। सी लेवल जो राइज हो रही है थ्रेटन टू कोस्टल फार्मर लैंड एंड वाटर रिजर्व, रेजिलियंस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर आज वेल द ह्यूमन लाइवलीहुड। रिपोर्ट नोटेड किया गया है द इम्पैक्ट ऑफ एवरेज सी लेवल जो राइज हो रही है बूस्ट टू बाय द स्ट्रॉम सर्ज एंड द टाइडल एविएशन। The situation during the landfall of the hurricane Sunday and न्यूयॉर्क और साइक्लोन इडियल ऑफ मजिबिक। तो उसके रिलेटेड आर्टिकल देगी कि सी लेवल की राइजिंग की वजह से मुंबई, ढाका, लंदन और न्यूयॉर्क में थ्रेट बढ़ गई है कि राइजिंग लाइन है थ्रेट में राइजिंग सी लेवल, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे। IIT मद्रास ने कैंसिल किया है class for the day after the protest over the student suicide following a night long student protest against the Charlos handling of the student suicide
एंड द अटेम्प्टिंग टू सुसाइड बाय अनदर स्टूडेंट ऑन द कैंपस सैटरडे। IIT मद्रास ने डिसाइड किया कैंसिल टू क्लास एंड एकेडमी वर्क ऑन मंडे। तो उसके रिलेटेड ये आर्टिकल दिए गए। IIT बॉम्बे ने डिनाई किया कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन चार्जेस आफ्टर द सुसाइड बाय स्टूडेंट। जो डे आफ्टर द एलिगेशन ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द दस्कर सोनिक, a first year IIT Bombay student who died by the suicide on the Sunday. The institution had the deny all the such accusation, calling it an unfounded allegation. The institution had the state that the internal probe IIT will be conduct as Sonaki dates and apart from the ongoing police investigation. चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे जो एडिटोरियल की है। डे लाइट नॉक, जो IIT सर्वे के BBC ऑफिस में और बीजेपी ने रनिंग किया है कॉन्टेम्प्रेरी और द हिट एंटी इंडिया स्मैकिंग बोलिंग इट इज़ अ मैच ए स्टोरी ट्रेंड। लेस देन ए मंथ एगो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग ने इवोक किया था इमरजेंसी पावर अंडर द 2021 IT rules to order online media platform to take down the link sharing of the past part of the BBC documentary India and Modi Question। on February 14 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंडक्ट किया सर्वे एट द BBC के ऑफिस में इन दिल्ली मुंबई। द फर्स्ट स्टेप इज द वाइडली seen to process his punishment treatment. The officially has alleged the BBC of non-compliance under the transfer of pricing rule, having the diverting significant of profit. BBC have the said it fully cooperating with the authorities and hope to have this solution resolved soon. Of course, BBC has not to answer in the law and which the address to whether question tax authority have, but the parallel contemporary by only one ruling party national spokesperson trashing the news organization corrupt and rubbish and accusing it of supporting to action against the British media organization with the global presence had come on the heel of controversial documentary on Modi, which government he saw division among the various community and make the unsentimental allegation giving the recent record of government to bias by section of media and civil society and latest action against the BBC survey have taken together to political attack and sparking the bullying and attempting to intimidate। जो IIT की सर्वे की गई है BBC के ऑफिस पे उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया है कि बीजेपी जो रनिंग कर रहा है कॉन्टेम्प्रेरी ऑन व्हाट इंडिया एंटी इंडिया स्मार्किंग ऑफ बुलिंग, क्योंकि BBC ने कुछ ही दिन पहले डॉक्यूमेंट्री पेश की थी जो इंडिया में मोदी क्वेश्चन के ऊपर जो मोदी सरकार के उनके कामकाजी के ऊपर बताया जाता था कि उनकी कितनी गलत काम की गई है। तो उसके रिलेटेड उनको पनिशमेंट देने के ख्याल से एक IIT के सर्वे किया गया, उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया। बिलियनियर विदाउट ए बेस, अडानी ग्रुप डज नॉट एंजॉय द पॉपुलैरिटी दैट लिंक अ कंपनी विथ ए कंट्री। जो रिस्पॉन्डिंग कर रहे थे हिडनबर्ग रिसर्च के स्पोर्ट्स टू अडानी ग्रुप बिजनेस एम्पायर ने प्रैक्टिस किया है। ग्रुप स्पोक पर्सन क्लेम इट इज़ द कैलकुलेटेड अटैक इन इंडिया will no censor union government have functionally to encourage the charges and some supporters of Bharatiya Janata Party have reported to statement on social media encouraging the Adani East India, claiming why does the sound practically excessive in the case of this conglomerate। जो अडानी ग्रुप ने हिडनबर्ग रिसर्च के रिप्लाई किया था कि अटैक इंडिया के ऊपर हुआ है, पर भारतीय जनता पार्टी अभी भी उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट नहीं दे रही है, जैसे कि इंडिया ही अडानी है या अडानी ही इंडिया है। तो उसके रिलेटेड आर्टिकल दिया गया है। जो बिलियनियर विदाउट ए बेस, अडानी ग्रुप डज नॉट इंटर करता है पॉपुलैरिटी द लिंक कंपनी विथ कंट्री। तो उसके रिलेटेड आर्टिकल दिया है। अडानी may have the rest forward to catch up the Mukesh Ambani to become richest man in Asia using the many of the stretchment that the Sensor and Junior Ambani used, but the significant difference Dhirubhai Ambani built to the business empire, creating a massive shareholder base. No business leader can give him to kind of the fair fall that the citizen of Mumbai giving him to were passed away for 202 and marching in there the thousands and behind the swords of the political and business leader from the across the country in the funeral procession। तो उसके रिलेटेड ये आर्टिकल दिया गया है। हेडी स्टार, जो प्रीमियम लीग एक्शन की गई है प्रोमिसर टू टर्न अराउंड इन वुमेन क्रिकेट, द टेस्ट इज नाउ द पुलिंग इन ए क्राउड। There were Cinderella story plenty on Beijing action on Monday on Women Premier League जो expected करे this fairy tale protagonist for cricket cleats and not crystal scandal
keep them on the not needless to be resold to anybody else। जो इस बार की प्रीमियम लीग एक्शन बहुत ज़्यादा दाम में खरीदी गई है प्लेयर्स को, तो उसके रिलेटेड ये आर्टिकल दिया गया। टेस्ट इज नाउ पुलिंग इन क्राउड, तो उसके रिलेटेड ये आर्टिकल दिया गया। हिंदी इन द वर्ल्ड इन द एरा ऑफ कल्चरल फ्लैटरिंग इंडिया मस्ट स्ट्रेटिंग इज अ लैंग्विस्टिक ट्रेडिशन। जो हिंदी है इट इज़ नॉट ऑफिशियली नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इट इज़ एन स्ट्रॉन्ग एंड लिंक लैंग्वेज बेस्ड ऑन द टू ऑफिशियल लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 528 million speak Hindi against the Bengali 97.2 million, Marathi 83 million, and Telugu 81 million, and Tamil 69 million speaker. It is the backdrop. It will be pattern to be appreciate the importance of India effort to make Hindi and UN recognized language for any India language to go global. For the first foremost need to be recognized and recalled. All of them need to be come up to political many nextless injurious linguistic chauvinism, but is observed them the next generation family member such as a politician are school in English medium, unlike France, Germany, Spain, speaking in Hindi or the original language in considered to inferior in India thanks to burden of colonialism। Sadly, ability conversion of India English has become the status सिंबल। तो उसके रिलेटेड ये आर्टिकल दिया गया कि हिंदी को जो यूएन ने रिकॉग्नाइज लैंग्वेज बनाने की कोशिश करा जा रही है, पर आने वाले सालों में जो पेरेंट्स हैं नेक्स्ट जनरेशन के वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे और उनको इंग्लिश मीडियम में ही बात करने की कोशिश करेंगे, जिससे हिंदी की इन्फीरियर हो जाएगी। तो उसके रिलेटेड आर्टिकल दिया गया अनलाइक द फ्रांस, जर्मनी और स्पेन स्पीकिंग इन हिंदी और रीजनल लैंग्वेज इज कंसिडर इन्फीरियर इन इंडिया थैंक्स टू बर्डन ऑफ कॉलोनियलिज्म की वजह से। सैडली एबिलिटी टू कन्वर्जन इन इंग्लिश हैज बिकम द सिंबल ऑफ स्टेटस फॉर इंडिया लैंग्वेज टू गो ग्लोबल। दे नीड टू फास्ट रेस्पेक्ट देयर मदरलैंड। तो उसके रिलेटेड आर्टिकल दिए गए। जुलाई ऑन मिशन डॉग्स आर की टू सक्सेस द रेस्क्यू ऑपरेशन इन द तुर्की नाउ, तो स्पेशली एज द हावर पास एंड हॉफ्स डीम जो मीट किए गए थे हार्ट ब्रेक लॉस एंड डेथ की सडन मिराकल हॉप keep hope to alive in search rescue team to currently engage in earthquake hit Turkey। One such miracle has the shockwave recovery of the 6-year-old girl alive in the Nordugi, Turkey, and 80 hours after a serious earthquake becoming a massive on February 6, which was the measured 7.8 Richter scale, devastated at the regional last week. For the Indian National Disaster Response Force team was also deployed in the city as a part of Operation Those and girls successfully rescued for the crowding moment for their effort and made possible by the Julie 6-year-old labor road। तो उसके रिलेटेड आर्टिकल दिए गए। तो तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रही है इंडियन डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स की, तो उसके रिलेटेड आर्टिकल दिए गए। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे जो आइडियाज की पेज है। जापान एंड द गोल्डन साउथ ग्लोबल साउथ Under the Prime Minister Fumio Kishida, Tokyo has been pushing G20 engagement developing nation while the casting aside the prosecution and recognition there the historical and cultural background. Japan ki long have been viewed to the passive member of the global north. It is only after the contribution was not leaned to Asian color and predominantly graduation of G20 formula. The color of G20 course of have been changing to thanks to alike to Barack Obama and Rishi Sunak, who have been rising the top of the politician head of the Democratic Society of the North। तो उसके रिलेटेड आर्टिकल देंगे जापान एंड ग्लोबल साउथ के तौर पे उभर रहा है। इट इज़ द कलम इट इज़ नॉट अबाउट द चेंजिंग द रेशियल कैरेक्टर ऑफ द G20 कंसल्टेंसी। The focus of Japan impressive recent to leadership in the world strategic idea in the Tokyo, for example, it is the constructed and popularized the Indo-Pacific construction over the last decade, and former Japanese Prime Minister Shinzo Abe first articulated the idea of Indo-Pacific in the address to the India Parliament in August 2007. The speech had called to the coalition of Indian democracies eventually took to the forum of the quadrilateral form, while the most of the countries, including India, USA, United and PO, took Indo-Pacific. It is the Tokyo decision that helped to the emergency of India-Pacific as the integral to the geopolitics of Asia। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे। आवर थ्रेटन आवर रिफ्लेक्शन ऑन स्टेज द बिलीफ्स एंड बीफ्स
of our experience are the transformed into the story as witness of times as well the documentary in history. When one come to festival like International Trade Festival Kerala in Tusuri, the experience was watching Day and Lebanon, Palestine and Denmark along with the Peter Book Timeless Art was a play from around the world. Feel one with the wonderment and the range and 3D forms of narrative are the being explored. तो उसके related article दिया गया है कि our thread our reflection. नेक्स्ट आर्टिकल्स पे ग्रीन ट्रांजिशन enabler. A global climate finance agency under the G20 could drive the climate action. जो एनर्जी ट्रांजिशन है आर द सेंट्रल ऑफ द G20 एजेंडा इन 2023. During India presidency, geopolitics and governments and the energy become the massive challenges as the shift from the fossil fuel to renewable energy, concern about the more energy security, and in many cases the pressure on keeping the financial commitments made by the reflected to tackle the climate change have become the complicated. The International Energy Agency account कर रहा है 20 million more people worldwide without the electricity now compared to 2021. Predictably worse affected in the sub-Saharan Africa, which is a block. It is the latest rate of electrification since the 2013. In Europe, number of people experience the inadequate energy supply that has risen to 80 million from the 34 million in 2021. Even middle income countries in Africa and South America, Asia face the fuel and electricity shortage. High level inflation and reduced availability of energy is hurting the economy or the industry close. Impact to the public health as the fuel such as a cooking gas become the expensive. Number of the countries face the balance of payment crisis, partly driven by the high energy cost. Energy poverty is the global and widely spread, impacting the technology implication, industry and sustainable development goals, all of which are the G20 goals. इंडिया में जो 2023 में G20 के गोल्स होने उसके रिलेटेड जो ग्रीन ट्रांजेक्शन अनेबल करा जा सकता है इंडिया की मेन फोकस रहेगी, तो उसके रिलेटेड ये आर्टिकल दिए गए. अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे जो एक्सप्लेन किए. मिसिंग डे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, द पोस्ट एंड द व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन से जो सुप्रीम कोर्ट ने मंडे में इशू किया है नोटिस को सेंटर एंड 5 स्टेट राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड झारखंड को ओवरऑल द फेल टू इलेक्ट डिप्टी स्पीकर की जो बेंच लीड बाय द जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. Chandrachud sought a response to PLI that the continued not the electing deputy speaker on the 17th present Lok Sabha, which was the constituted on July 9 to 2019 against the letter and spirit of the constitution. The post trying to be vacant in the 5 state assembly as well the first constitution between the 4 year almost 1 years ago. Peel state Sadiq Ahmed of Indian Union or others were जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है अबाउट द डिप्टी स्पीकर, जो आर्टिकल 93 कहती है हाउस ऑफ द पीपल सेल एंड सून बी मे बी चूज टू अ मेंबर by the speaker and deputy speaker. So often the office of speaker deputy speaker become vacant, the house shall choose another member. तो उसके रिलेटेड आर्टिकल देंगे. और आर्टिकल 178 कंटेंट द कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट. तो उसके रिलेटेड आर्टिकल देंगे कि अभी भी लोकसभा में डिप्टी स्पीकर की पोस्ट वैकेंट है और 6 स्टेट में भी वैकेंट देखी गई है. तो उसके रिलेटेड ये आर्टिकल दिया गया है. अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पर. जियो हेरिटेज साइट एंड जियो रूल जो सेंटर ने ब्रॉड किया है ड्राफ्ट बिल फॉर द कंजर्वेशन प्रिवेंशन एंड मेंटेनेंस ऑफ साइट. तो ट्यूसडे में लास्ट डे ऑफ द कमेंटमेंट था, सजेशन था टू बी सेंड द ड्राफ्ट जियो हेरिटेज साइट की और जियो रिलाइज की प्रोविजन एंड मेंटेनेंस बिल 2020 को नो नोटिफाई बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड बिल एम टू प्रोवाइड द preservation and protection and maintenance of the geo heritage site and geo release of national importance. तो उसके रिलेटेड आर्टिकल देंगे. जो न्यू ड्राफ्ट बिल है डिफाइन कराया जियो हेरिटेज साइट को और साइट कंटेनिंग द जियो रिलीज एंड द फिनोमिना एंड स्ट्रेटेजिक टाइप ऑफ द सेक्शन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड जियोमॉर्फोलॉजी लैंड फ्रॉम द इंक्लूडिंग कैप्स एंड नेचुरल रॉक एंड स्कल्पचर एंड नेशनल इंटरनेशनल इंटरेस्ट की इंक्लूडिंग करेगा सच एस ए पोर्सन ऑफ लैंड ऑब्जर्विंग इन साइट एंड मे बी द रिक्वायर्ड टू बी देयर द कंजर्वेशन एंड एक्सेस. तो उसके रिलेटेड आर्टिकल दिए गए. अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे. हाई एल्टीट्यूड बैलून जो यूएसए और चाइना में ट्रेड किया गया चार्जेस ऑफ द स्पाइक ऑन ईच अदर बैलून. व्हाट इज द प्रपोज आर बैलून यूजुअली सेंट टू इनटू एयर. व्हाट मेक्स द यूजफुल टू सर्विलेंस एंड व्हाट कॉमन इज सच यूज.
जो यूनाइटेड स्टेट और चाइना ने करंटली इन्वॉल्व किया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टैंड ऑफ ओवर द एलिगेशन ऑफ स्पाइनेज थ्रू द हाई एल्टीट्यूड बैलन। लास्ट वीक यूएसए ने डाउन किया था 3 अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्टिव फ्लाइंग ओवर द स्पेस of that Canada. The downed to object that are not be recover, so that not only clear the what is are the balloon. The first incident February 4 involving China balloon at the Beijing claimed that the meant for research purpose was accidentally blown off to cases of by wind. USA have also named to the Chinese balloon enter the airspace on the latest 4 earlier occasion, remaining the under-detect that at the time and China at Trump and who accused the USA of the spending surveillance balloon over the airspace at least 10 time since the last year। तो उसके रिलेटेड आर्टिकल देखिए जो हाई एल्टीट्यूड बैलून के द्वारा सर्विलांस किया जाता है और इससे स्पोनेच किए जा रही है। इंडिया यूएसए और चाइना ने दोनों एक दूसरे के ऊपर एक्यूजेस लगाए तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे। मैसिव प्रोटेस्ट इन इजराइल ओवर द नेशनवाइड प्रोसीजर ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म। Thousands of Israel took street to outside their parliament of in Jerusalem the Monday में protest sweeping the judicial reform जो की जा रही है introduced by the Prime Minister Benjamin Netanyahu coalition government के द्वारा। The protester who is carrying the Israel flag and megaphones and homemade banners writing the slogan of support of democracy, freedom and judicial independence। तो उसके आर्टिकल देखिए मंडे में जो प्रोटेस्ट किए गए जस्ट आफ्टर द प्रेसिडेंट इजाक हॉर्ज हैव गिवन द टेलीवाइज स्पीच वार्निंग द कंट्री वाज नो ब्रेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन सोशल लैब्स ही आर्ग्यूज टू लॉ मेकर टू रीच द कॉम्प्रोमाइज ऑन द इशू। तो उसके रिलेटेड आर्टिकल दिया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे जो वर्ल्ड की है द फास्ट डायरेक्ट चैलेंजेस टू एक्स बॉस ट्रम्प हेरली टू रन प्रेसिडेंट। जो प्रोमिनेंट इंडियन अमेरिकन पॉलिटिशियन है निकी हेलरी लॉन्च किए हैं हर प्रेसिडेंट कैंपेन ऑन द ट्यूसडे बिकमिंग द फर्स्ट रिपब्लिकन टू चैलेंज द फॉर्मर यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प इन 2024 बिड फॉर द व्हाइट हाउस। तो उसके रिलेटेड आर्टिकल दिए गए। शूटर किल सेल्फ आफ्टर द हंटेड गनमैन किल एट द मिशिगन यूनिवर्सिटी 5 स्टूडेंट critically पुलिस से gunman was the body found with a note in pocket indicating the threat to school। गनमैन ऑफन फायर किया गया मिशिगन स्टेट की यूनिवर्सिटी में किलिंग किया है 3 स्टूडेंट को और वार्निंग किया है 5 मोर को बिफोर द फैटली शूट डाउन हिमसेल्फ माइल अवे आफ्टर द आवर लॉन्ग मार्चेंट दैट द फर्स्ट फ्राइट एडन स्टूडेंट टू हाइक इन द डार्कनेस। तो उसके रिलेटेड आर्टिकल दिए गए। भाजपा ने वांटेड किया है टू मी कॉन्डम रसिया आई सिटीज इंडियन एग्जाम्पल। पाकिस्तान में आउटरेस किए गए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के द्वारा क्लेम द फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल कमर वाजपेयी हैव वांटेड टू हिम कंडम रसिया फॉर इन्वेडिंग यूक्रेन बट द देन प्राइमर डिड नॉट बी ऑब्लिगेट हिम टू किटिंग द एग्जाम्पल ऑफ इंडिया। क्विक रेस्क्यू ऑफ नियर एंड द फोकस शिफ्ट टू द होमलेस। जो सर्वाइवर हैं जॉइन टू मैसअप एक्सक्लूड फ्रॉम द अर्थक्वेक हिट जोन तुर्की में ट्यूसडे में होम लिविंग टू देयर द होम little hope of coming back to and seeing the loved ones pulled away from the rubbles and time when the someone of the rescue operation are the pulling out. It is very hard to will start to from zero and without the belonging, without a job. 20 years old the Hamaj Bakery, a Syrian who has been living in Hatay, Turkey for the 12th year. Our house collapsed and completely several of our relatives dies. There are still one under the rubble and he added the he prepared to follow his family Stefan in South Turkey। तो उसके रिलेटेड आर्टिकल दिए गए। war in critical phase keep appeal for jet। जो यूक्रेन है ट्यूसडे में रिन्यू किया है अपील टू वेस्टर्न कंट्री को फाइटर जेट के लिए फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर मॉस्को ऑलमोस्ट लॉन्ग इन्वेंशन बट उन नो एश्योरेंस एट द हाई लेवल डिफेंस मीटिंग इन द ब्रसल दैट इट बी रिसीव इट। तो उसके रिलेटेड ये आर्टिकल दिया गया। ड्राफ्ट looming Kenya argue people for help pray to go your gods with the prospect of 6 consecutive fail of the rainy season in the last and horny of Africa। the Kenya के प्रेसिडेंट ने होपिंग किया कि heaven will be finally upon the hope of national day and mass prayer on Tuesday। तो उसके रिलेटेड आर्टिकल दिए गए। अब चलता है नेक्स्ट पेज पे इकोनॉमिक की है। वाई डॉस आर वी हाउस होल्ड सर्वे सी रिटेल इन्फ्लेशन स्टे इवेल्यूएटेड।
ऑन मंडे में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि रिटेल इन्फ्लेशन जो साउट की गई है 6.52% जनवरी में फ्रॉम द 5.72% इन दिसंबर 2022 प्राइमरली ड्यू टू द राइज ऑफ फूड इन्फ्लेशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हाउस होल्ड सर्वे ने इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन कराया था रिलीज after the monetary policy of February 8 to show the retail inflation is expected to remain elevated in the next 1 year with all around the rise in price across the board। तो उसके रिलेटेड ये आर्टिकल देगा। अडानी इंटरप्राइज पोर्ट्स की 820 करोड़ की नेट प्रॉफिट देखी गई है वर्सेस टू 12 करोड़ लॉस एन ईयर एगो। जो अडानी इंटरप्राइजेस की हुई इज आई ऑफ स्टॉर्म क्रिएट टू द हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट। अडानी ग्रुप ने रिपोर्ट किया है शार्प जंप इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 739.88 करोड़ फॉर द थर्ड क्वार्टर एंडेड द दिसंबर 2020 आज अगेंस्ट द 1.80 करोड़ इन सेम पीरियड लास्ट ईयर अराइज टू द 41,000%। द नेट प्रॉफिट अट्रीब्यूट टू एबल टू ओन्स कंपनी साउट टू 820.06 करोड़ फॉर द क्वार्टर फ्रॉम लॉस ऑफ द 11.63 करोड़ ईयर अगो। तो उसके रिलेटेड ये आर्टिकल दिया गया। नीड मोर सर्टेनिटी अमंग द टैक्सेशन ईजिंग द मार्केट रूल बैकस्टोन प्रेसिडेंट सेइंग दैट द he is long term bullish in India, that is the growth rate in India will be remaining fully higher than most country around the world। जोनाथन ग्रे जो प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है ब्लैकस्टोन कॉल्ड द सर्टेनिटी अराउंड द टैक्स फ्रेमवर्क एंड रिडक्शन इन द रेगुलेशन इन द पब्लिक मार्केट। तो उसके रिलेटेड आर्टिकल दिया गया। भारत फोर्ज कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट फेल्स 80%। जो ऑटो कंपोनेंट की मेजर भारत फोर्ज लिमिटेड है ट्यूसडे में रिपोर्ट किया कि 81.35% की डिक्लाइन की गई कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में और 78.72 करोड़ की थर्ड क्वार्टर में एंडेड किया दिसंबर 2020 हिट बाय द हायर एक्सपेंसेस। तो उसके रिलेटेड आर्टिकल दिए गए। होलसेल प्राइस इंडेक्स इज टू 2 years लो ऑफ द 4.73 इन जनवरी। जो होलसेल प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन डिक्लाइन की गई 2 years लो of the 4.73% जनवरी में ईजिंग द प्राइस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग आइटम फ्यूल एंड पावर इविंग द थ्रू द फूड आर्टिकल टर्म टू एक्सपेंसिव। तो उसके रिलेटेड आर्टिकल दिए गए। गिव डिटेल ऑफ रिकवरी एजेंट टू डिफॉल्टर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ट्यूसडे में कहा कि डिजिटल लेंडर जो शुड बी कन्वे द नेम एंड अदर डिटेल्स ऑफ एम्प्लेसिंग द रिकवरी एजेंट ऑथराइज टू द कंडक्ट बोरो इन केस ऑफ लोन डिफॉल्ट इन टाइम ऑफ द सैंक्शन ऑफ लोन। तो उसके रिलेटेड आर्टिकल दिए गए। फोर्ड ने स्लैश किया है 3,800 जॉब अक्रॉस द यूरोप। द फोर्ड ने कहा कि ट्यूसडे में इट विल बी कट 3,800 jobs in Europe over the next 3 years in effort to streamline the operation and contain an economic headwind to increasing the competition in electronic car। तो उसके रिलेटेड आर्टिकल दिए गए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में और कुछ नहीं है। तो आज के द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस में इतना ही। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।